So in this session, we will learn to implement batches. Sometimes you need to execute more than one SQL statement to perform a task, right? एमती बेले बेले गोटे गोटे टाइम आसे तमर जो थे कि तमे गोटे रु अधिक SQL statement at a time तमे execute करिया पई तुमको पड़िबो, right? In such a case, you can send all the SQL statement together to SQL server to be executed as a unit. This help in reducing the network traffic, right? So at a time जेतले तमे more than one SQL statement को जेतले at a time जेतले execute करिवो से कोन हुए traffic jam होय जाय जेमिति धर तमे तम लैपटॉप रे हो तमे वर्ड ओपन करलो संगे संगे तमे एक्सेल ओपन करलो संगे संगे तमे SQL सर्वर ओपन करलो तो तम जेतले तमे माने स्विच ओवर करछो गोटे स्टेट रु आ गोटे स्टेट को जेतले स्विच ओवर करछो समटाइम्स तमरो लैपटॉप रे टिके हैंग ही जाय, राइट? कारण एट ए टाइम सब जाक एग्जीक्यूशन होची सेमिति एसक्यूएल सर्वर रे भी मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट को तमे जतरे एट ए टाइम जतरे एग्जीक्यूट करो सेतरे टिके ना को हैंग हुए सेतरे ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक के जाम हुए तो सही केस रे मोर बैच इंप्लीमेंट कर पारि तो बैच माने से एट ए टाइम गुड से जेति कि तमरो अछि एसक्यूएल स्टेटमेंट जेति कि अछि सेति कि स्टेटमेंट को एट ए टाइम से एग्जीक्यूट करि परिबो ट्रैफिक जाम होबन. How can you send multiple SQL statement for execution? You can use batches to send multiple SQL statement for execution. Batch is a group of SQL statements submitted together to SQL server for execution. Compiles the statement as a single executable unit called an execution plan. Use go command at the end to the send the SQL statement to the instance of SQL server. Batch माने जेते सब तुमरो SQL स्टेटमेंट तमे दबो लास्ट रे खाली जदी गो लिखि दबो से कोन कर दबो एट ए टाइम तुमरो जेते सब SQL स्टेटमेंट अछि सब गुडा को एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर दबो. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, देन गो, राइट? लिखि दला SQL स्टेटमेंट देन तळे गो लिखि दबो देन सेटा तुमरो डाटाबेस रे तमरो जाकी स्टोर हे हला एट ए टाइम जेति कि बंच अछि सेटा तुमरो डाटाबेस रे तुमरो स्ट्रेंथ. Using variable batch use variable to store the value during execution. A variable must be declared by using the declare statement. A variable name is always preceded by the @ symbol. The syntax of declaring variable is declare @ variable name then data type, right? For example, declare @rate तापर data type ता रहबो. Select rate equal to maximum rate माने रेट कॉलम रे जहां भी मु वैल्यू पास करी सेटा तारा मैक्सिमम से बाहर करियो फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय पे हिस्ट्री गो. तो एटा गोटे स्टेटमेंट देन एटा गोटे स्टेटमेंट एटा कोठू रिट्रीव होबो एम्प्लॉय पे हिस्ट्री रो जदी गो दे दोची एट ए टाइम देटा स्टेटमेंट को से एग्जीक्यूट करताओ हला. रेट कॉलम भी डिक्लेयर कर दो ता भितरे डाटा टाइप भी दे देबो से आईएनटी ता भितरे वैल्यू स्टोर हे कि थिबो इंटीजर टाइप देन ता से वैल्यू भितरु मैक्सिमम रेट ता केते अछि सेटा तमु शो करबो काठू एम्प्लॉय पे हिस्ट्री एटा एट ए टाइम मोर एग्जीक्यूट हो हला. आ ए जो @ जो कॉलम ता तमरो विशेष करी यूज करा जा कोठी जेतल तम फ्रंट एंड रु बैक एंड को तमे कनेक्शन करूछ. फ्रंट एंड रे धर तमर गोटे फॉर्म अछि सेति तमरो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह अछि तार बेस करी कि तमे डाटाबेस रे गोटे टेबल क्रिएट करछ. तो डाटाबेस ता होची तमर डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्रंट एंड ता जो डिजाइन करछ सेटा तमर डिफरेंट प्लेटफॉर्म दीटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म को जेतम कनेक्टेड करूची सेता गोटे प्लेटफॉर्म रो आ गोटे प्लेटफॉर्म को जेतरे वैल्यू जेतरे स्टोर होबो सेता मते @ वेरिएबल डिक्लेरेशन ता मते निहाती दरकार, राइट? declare variable @ assign the maximum value of the rate column from the employee pay history table to the variable @rate. Displaying user defined message, a batch use the print statement to display user defined message and values of variable. For example, print @rate. You can also use comment entries in batches in the following ways, that is जेम तमे लैंग्वेज जेम कमेंट दोथलो एठी भी सेमते तमे कमेंट दो. कमेंट माने डॉक्यूमेंटेशन सेटा एग्जीक्यूटेबल नो, राइट? मल्टीपल लाइन कमेंट तमे देले तमे स्टार स्लैश स्टार एंड एंड करिवो स्टार स्लैश रे. सिंगल स्टेटमेंट जदि तमे कमेंट दोचो एटा तमर ओराकल भी लागू होची जे पीएलएसपी ले तमे भी लागू होची. डबल हाइफेन दबो
हेले तमर जहा तापर जहा भी लिखियो सेटा सिंगल स्टेटमेंट रो कमेंट सेटा guideline to create batches. While creating batches, you need to consider the following restriction. You cannot bind rule and defaults to columns and use them in the same batch. You cannot define and use the check constant in the same batch. You cannot drop object and restrict, recreate them in the same batch. You cannot alter a table by adding a column and then refer to the new columns in the batch created earlier, right? एटा होची गाइडलाइन जो गाइडलाइन को हमको नजर रखी के हम बैचेस को ऑपरेट करिबार अछि. Which of the following statement can be used within a batch? Declare statement मोर batch रे create हुए. Let us understand the programming construct in batches. Programming construct always batches to perform the conditional execution of statement. A batch use the following construct in control the flow of statement, that is if else statements, then case statement, case माने switch case statement, then while statement. तो if else टा होची कि मोर कोन कंडीशन, राइट? तो कंडीशन रे जेताले मोर कंडीशन रे ट्रू देबी, सपोज मु एठी तमु देखौची. सपोज जेताले मो लैंग्वेज जेता मेंशन करछि सेताले इफ दोछि ब्रैकेट भितरे एठी कंडीशन देबी, राइट? देन बॉडी भितरे एठी तार ट्रू स्टेटमेंट जहाँ भी लिखिबार अछि तार ट्रू स्टेटमेंट देबी. देन एल्स, देन फॉल्स स्टेटमेंट. राइट? इफ रे मोर कंडीशन जदी ट्रू हुए तार इमीडिएट ब्लॉक भितरे जहाँ अछि सेटा तमर ट्रू वाला स्टेटमेंट. देन जदी कंडीशन हमर फॉल्स अछि तारे एल्स ब्लॉक भितरे जहाँ तमर मेंशन हबो सेटा तमर होछि फॉल्स वाला स्टेटमेंट. तो एटा एट ए टाइम गोटे बैच रे मोर जाय. ट्रू हेले कोनटा देखो, फॉल्स हेले कोनटा देखो. तो एग्जीक्यूट हुए भी एट ए टाइम भी एग्जीक्यूट हुए. सेमिति स्विच केस भी एंड व्हाइल स्टेटमेंट. व्हाइल स्टेटमेंट तमर यूज हुए लूपिंग पई, माने गोटे स्टेटमेंट को या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को मोर देन वंस थरो तमे जदी एग्जीक्यूट करिया पई तमु जदी पड़े ताले सेताले लूप स्टेटमेंट तमरो यूज करा जाय. व्हाइल हो, डू व्हाइल हो, फॉर लूप हो, एटा तमरो यूज करा जाय. The if else statement is used to perform a particular action based on the result of the boolean expression. Boolean माने boolean गोटे डाटा टाइप जोटा कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे, हला. तो boolean expression रे if boolean expression माने एठी होची कंडीशन. if जदि मोर कंडीशन ट्रू हबो ताले begin एटा होची तमर बॉडी, begin और end स्क्वेयर स्टेटमेंट तमर हबो. जदि कंडीशन टा जदि ट्रू हबो ताले एटा एग्जीक्यूट हबो. begin और end इमीडिएट ब्लॉक भितरे कंडीशन रो इमीडिएट ब्लॉक भितरे जहाँ लिखिबो सेटा होची ट्रू वाला स्टेटमेंट, राइट? तो एठी तमर कंडीशन दबो, इफ परे कंडीशन दबो. कंडीशन ट्रू हबो जदी begin और end भितरे जहाँ लिखिछो सेटा होची तमर ट्रू वाला स्टेटमेंट, जहाँ भी स्क्वेयर स्टेटमेंट लिखिछो. जदी कंडीशन टा मोर फॉल्स होची, बुलियन एक्सप्रेशन टा जदी फॉल्स होची ताले एल्स ब्लॉक रो बॉडी भितरे begin और end भितरे तमर जहाँ भी लिखिबो सेटा तमर फॉल्स वाला स्टेटमेंट. क्लियर? For example, declare at rate money, select at rate equal to rate from human resource dot employee pay history, where employee ID equal to 23. If at rate is less than to 15, एटा होची मोर boolean expression माने condition. If at rate is less than to 15, जदि 15 less than 15 अछि तले print review of the rate is required. एटा तुमको डिस्प्ले करो. जदि कंडीशन जदि ट्रू हैला ताले एटा तुमको डिस्प्ले करो रेट रिव्यू ऑफ द रेट इज रिक्वायर्ड. जदि कंडीशन दा फॉल्स हैला ताले एल्स ब्लॉक भितरे मोर कोन लिखाई छी रिव्यू ऑफ द रेट इज नॉट रिक्वायर्ड.
प्रिंट रेट टाको डिस्प्ले करिवो तमरो जहा अछि हला बुझला एंड तळे मोर गो स्टेटमेंट दिया आइछि माने मल्टीपल स्टेटमेंट गुडा को मु एट ए टाइम एग्जीक्यूट करि पारि बुझला आगुर कोन होतला सिंगल सिंगल स्टेटमेंट आमे एग्जीक्यूट करथले बट एबे मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल एरिया रो स्टेटमेंट गुडा को मु एट ए टाइम एग्जीक्यूट करि पारि compare the value of the at rate variable with the value 15 by using less than comparison operator. The case statement is used to evaluate a list of condition and returns one of the possible result, that is syntax case input expression when expression then result expression एटा तार सिंटैक्स टा माने के तमर स्विच केस हेडा जाए सेठी कोन जदि मोर केस रे जो कंडीशन टा मु देबी जो एक्सप्रेशन टा मु देबी जो तार मल्टीपल ऑप्शन अछि राइट से एक्सप्रेशन टा तार मल्टीपल ऑप्शन रे को कहा संगे तमर मैच होछि जा संगे मैच होछि तार पार्ट रे जहा लिखा हिछि सेटा मते एग्जीक्यूट हो जेमिति धरो जणे +2 क्लियर कला परे ता पाखरे मल्टीपल ऑप्शन रोछि कोन +3 करि परिबो इंजीनियरिंग करि परिबो डिप्लोमा करि परिबो तमर मेडिकल लाइन रे जाई परिबो राइट तो ए जो ऑप्शन उडा एटा कोन एजुकेशन तो केस रे मो कोन रहबो एजुकेशन सेही केस रे मु जहा भी चूज करी सपोज इंजीनियरिंग तो तमर एक्सप्रेशन रे इंजीनियरिंग थिबो इंजीनियरिंग पाखु पळेबो से इंजीनियरिंग भितर जहा भी लिखाई सेटा तमर एग्जीक्यूट करी देखेला हला बुझला तो केस पाखरे मोर मल्टीपल ऑप्शन थाए बट इफ एल्स रे तमरो कंडीशन टा ट्रू हेले कोनटा देखेबो कंडीशन टा फॉल्स हेले कोनटा देखेबो बस एतिक बुझला एतिक डिफरेंस ट्रू इफ एल्स रे ट्रू और फॉल्स थाए स्विच केस रे मल्टीपल ऑप्शन तमर पाखे थाए तमे चूज करि परिबो कि तमे कोउटा एक्सप्रेशन टा को एग्जीक्यूट करिया पे चाहू हला फॉर एग्जांपल जेमेति सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी मेरिटियल स्टेटस केस मेरिटियल स्टेटस when m जदि मेरिटियल स्टेटस तमे m देलो देन मैरिड राइट जदि मेरिटियल स्टेटस तमे s देलो देन सिंगल जदि तमे किछि देलोनी ताले नॉट स्पेसिफाइड एटा होची स्विच केस माने मेरिटियल स्टेटस रे मो पाखरे ऑप्शन रहला आइदर मु m दे परबी या फिर s दे परबी जदि m दबो ताले एटा मैच करी कि तमु देखेबो मैरिड बोली जदि तमे s दबो ताले एटा मैच करी देखेबो सिंगल बोली जदि तमे किछि देलोनी ताले हम कोन देखेबो नॉट स्पेसिफाइड राइट display the marital status as married or single. The while statement is used to execute repeatedly as long as the given condition holds true. Right? While statement got a looping construct. Looping माने कौन? The sequence of statement repeated more than once. Right? तो किछिटा sequence of statement को तमे जदि गोटे रु अधिका थर तमे जदि execute करिया पय चाहछो सेटा कुआ जाय loop. लूप मोर दि प्रकार अछि गोटे होची वेरिएबल लूप आ गोटे होची मोर सॉरी गोटे होची फिक्स्ड लूप आ गोटे होची तुमरो वेरिएबल लूप राइट तो फिक्स्ड लूप माने कोन होची डेफिनाइट टाइम जाय तमरो एग्जीक्यूशन करबो त माने नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन तमु जणा अछि 100 टाइम्स हो 10 टाइम्स हो 5 टाइम्स हो से स्टेटमेंट को 5 टाइम्स तमरो एग्जीक्यूट करबो वेरिएबल लूप कोन इनफिनाइट टाइम जाय तमरो एग्जीक्यूशन करबो तम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन तमु जणा नै राइट से लूपिंग चलिथिबो केबे भी स्टॉप हो राइट तो एठी से देछि व्हाइल लूप राइट फिक्स्ड लूप रो आ गोटे पार्ट होछि तमरो व्हाइल लूप कोन जेते जाय तमरो कंडीशन से व्हाइल रे जो कंडीशन रा तमे दबो बुलियन एक्सप्रेशन रा कोन जहा दबो जेते जाय तमरो कंडीशन रा ट्रू होथुबो ता बॉडी भितरे जहा भी स्टेटमेंट लिखा आइथबो सेटा तमरो एग्जीक्यूट हो जेतेले तम से बुलियन एक्सप्रेशन रा तम फॉल्स हे जिवो देन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रा बाहर पळे आसी माने से लूप रो से बाहर पळे आसी is used to break and or continue the loop by using the break and continue statement. The syntax is while boolean expression then tamara statement execute habo dhara tamar statement ta tamara satisfy helani then break kar dabo se stop he jibo jodi tamara boolean expression tama satisfy hochi tamara next line ku tale seita ku execute karibo continue karibo hala break au continue break use kara jaye flow of control ta ku sethi hi stop kariya pai and continue statement use करे जे ताको कंटिन्यू करिया राइट फॉर एग्जांपल while select average rate +1 right
form human resource dot employee pay history is less than to 20 begin एटा होछ हमर कंडीशन सिलेक्ट एवरेज रेट रो एवरेज बा करियो +1 करियो एवरेज बा करियो ता +1 करियो फॉर्म कोठू एम्प्लॉय पे हिस्ट्री केते लेस देन 20 जदि कंडीशन रे ट्रू होउची ताले बिगिन भितरे मोर तार स्टेटमेंट सब लिखा है माने अपडेट ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय पे हिस्ट्री सेट रेट इक्वल टू रेट +1 फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय पे हिस्ट्री इफ सिलेक्ट मैक्सिमम रेट +1 फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय पे हिस्ट्री इज ग्रेटर देन टू 127 माने से एग्जीक्यूशन करिछि जदि कंडीशन ता मोर ट्रू होची देन एई गुडा मोर एग्जीक्यूट हबो एग्जीक्यूट हला परे तापर से जेते जाय मोर ए कंडीशन रे ट्रू होथबो ए गुडा मोर एग्जीक्यूट करूथबो जदि कंडीशन ता फॉल्स हे जो देन बाहर को पळेसो मोर कंटिन्यू करबो नेक्स्ट स्टेटमेंट गुडा कंटिन्यू करबो एंड तमर व्हाइल रो पूरा बॉडी तमर अछि बिगिन आउ एंड राइट से बॉडी भितरे जहा तम स्टेटमेंट दबा कथा दबो इफ स्टेटमेंट दे परिबो केस स्टेटमेंट दे परिबो लूप भितरे माने मु किछिटा स्टेटमेंट को मु एग्जीक्यूट करूची राइट फॉर एग्जांपल जेमिति धर तम कॉलेज रे गोटे एथलेटिक मीट होछ ठीक अछि सेथरे तुमको तमे पार्टिसिपेट करछ तुमको आगला जे 15 तमे पार्टिसिपेट करछ 1500 मीटर्स रेस रे राइट रनिंग रेस रे तो 1500 मीटर्स माने गोटे ग्राउंड रो तीनटा राउंड तुमको बुलीबार अछि तीनटा राउंड तुम दौड़ीबार अछि राइट तो जोठू तुम स्टार्ट करिवो सेटा होछि तार इनिशियलाइजेशन पॉइंट राइट इनिशियल पॉइंट रनिंग रेस जदि स्टार्ट होउची इट मींस कोन कोठ ना कोठ तो गोटे स्टार्ट होबो ना तो जोठी तुम स्टार्टिंग पॉइंट है सेटा होछि तुम इनिशियल पॉइंट देन तुम पाखरे कंडीशन कोन रहला तीनटा राउंड राइट जेते जाय तुम तीनटा राउंड कंप्लीट करनो तुम 1500 मीटर्स तुमरो कंप्लीट हेई नाही जेते तुम तीनटा राउंड कंप्लीट कर दबो सेटा होछि तुमरो सरी गला तुम 1500 मीटर्स रनिंग तुम क्लियर कर दबो तो 50 जो तीनटा राउंड होछि सेटा होछि तुमरो कंडीशन राइट देन स्टेटमेंट कोन तुमको दौड़ीबार अछि तो जेते जाय तुम कंडीशन ता ट्रू होथबो सेते जाय तुमरो तुम दौड़थो वंस थरे तुम कंडीशन का फॉल्स हेगला माने तुम तीनटा राउंड बुल्ला पर जेते फोन थरे चेक कले जे मु आउट राउंड बुली गली तुम स्टॉप करा हेला तो सेटा होछि तुमरो ब्रेक सेटा होछि तुमरो ब्रेक राइट तमे फोर्थ राउंड आउ तमे मारी परिबो नाही कारण तुम तीनटा राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हे जायछि धर तुम तीनटा राउंड कंप्लीट करिनो ताले तुम कंटिन्यू करथु सेमती तीनटा राउंड जो हेला जे तुम कंटिन्यू करथु हला बुझिला check if the average hourly salary rate of all the employees is less than $20 increase the hourly salary of all the employees until the average hourly salary reaches near $20 ensure that the maximum hourly salary should not exceed $127 In this session, we will be learned to implement batches, implement store procedure. Ebe asla store procedure. Store procedure ro importance is the adhika. Let us understand how to handle the errors and expression in batches. The error that occurred at runtime is known as exception. Exception can be handled in the following ways, that is by using the try and catch construct, right? By using the raise error statement and handling the error in the application, right? तो जेताले तमरो धर तमे प्रोग्राम जेते क्वेरी लिखुछो सेताले तमे कोठी ब्रैकेट मिस कर दोछो या फिर कोठी तमे धर भैरकर यूज करछो वैल्यू पास करला से कोठी सिंगल कोटेशन दोउनो तो से तुमको एरर थ्रो करछि से जो एरर ता सेटा केमिति आसुछि केमिति खोजुछि तो ता बैकग्राउंड जो जेताले से माने सॉफ्टवेयर टाको डेवलप करथिले सेताले से माने ए सब जिंस ट्राई एंड कैच तुमको अप्लाई करके तुमको देखला हमें खाली यूज करूछे केमिति हेइछि हमें देखु कोन बट एबे तुमको कहूछि जे एरर टाको हैंडल केमिति करि परिबो राइट ट्राई रो मीनिंग कोन ट्राई रो ब्लॉक भितरे ट्राई रो बॉडी भितरे जो एसक्यूएल स्टेटमेंट तमे दोउछो ट्राई कोन करबो से एसक्यूएल स्टेटमेंट भितरु तुमको एरर टा खोजिबो राइट खोजी कि निजे हैंडल करिवोनी से काहा को थ्रो करिवो से कैच को थ्रो करिवो खोजिबो देन थ्रो करिवो काहा को कैच तापर से एरर टा को हैंडल करे हला बुझला देन
धरी धर तुम एरर टाको रेज करिवार अछि ताले रेज एरर स्टेटमेंट तुम एक्सिक्यूट करि पारि राइट यूजिंग ट्राई कैच block enclose a group of TSQL statement if any error occurs in the statements of try block control passes to the catch block enclose another group of statement which gets executed when an error occurs in the try block right तो try block भितरे try रो block भितरे जो SQL statement दोचो try कौन करूची से SQL statement तो error टा खोजुची देन थ्रो को आगु करची कैच को थ्रो करची तो कैच से SQL स्टेटमेंट एरर टा को से हैंडल करी राइट in the catch block if you can use the following statements function to determine the information about errors error line error message error number error procedure error severity error state तो एगुडा होची तमरो गोटे गोटे जे तमरो एरर हैंडलर रोडा एडा तुमको एक्सिक्यूट करिया पड़े माने तुम सेही टाइप रो एरर तुम आसले एही प्रकार फंक्शन तुम यूज करि पारि हैंडल करिया पय error line returns the line number at which the error occur error message specified the text of the message that would be the return to the application returns the error number returns the name of the store procedure or trigger in which the error occur trigger कोन तम नेक्स्ट चैप्टर रे तमर अछि trigger कोन राइट तो सेतला तम trigger विषय जानि परिबो returns the severity returns the state of the error for example begin try block भितर मु देली मोर स्टेटमेंट SQL स्टेटमेंट उडा सब देली देन मोर जेते सब मोर SQL स्टेटमेंट सब देइछि सी ताकू ता भितर एरर टा खोजिबो खोज साला बे कोन करबो कैच रे मोर सेटा को हैंडल करबो राइट जो SQL स्टेटमेंट उडा मु देइछि ट्राई भितर से ट्राई कोन करबो से SQL स्टेटमेंट उडा को एक्सिक्यूट करबो एक्सिक्यूट कला परे ता कामटा कोन एरर कोठी अछि से SQL स्टेटमेंट सेटा खोजिबो खोजी साला पर कोन काहा को दबो से दबो कैच ब्लॉक रे मु से फंक्शन उडा को यूज करबी देन ता भितर मोर मोर से मेसेज उडा को पास कर दे जदी सेही टाइप रो जदी एरर जदी आसिला लाइन एरर जदी आसला या फिर नंबर एरर जदी आसला ताले सेही प्रकार मेसेज तुमको शो कर हला जेमते तळे तमे तमरो जेतळे SQL स्टेटमेंट जेतळे एक्सिक्यूट तळे देखोनी कॉमा मिसिंग नियर अबाउट सेमिकोलन मिसिंग तो सेही एई फंक्शन भितर सेटा मोर आसे राइट raise error is used to return message back to the called application use the same message format as a system error or warning message generated by the SQL server database engine can also return user defined error message syntax raise error message then severity then state right user defined error message तुम शो कर for example try block भितर तमे देला स्टेटमेंट देला SQL स्टेटमेंट उडा देला then तुमको से देला एठी कोन select at date difference equal to date diff hours start and end store the difference between the start time and the end time in a variable named at date difference right then raise an error if the difference between the start time and end time is less than 8 hours right then catch block रे सेटा पास करिवो डिफरेंस देखेबो जदी मोर कैच ब्लॉक रे जदी ट्राई ब्लॉक रे मोर एरर आसला त कैच ब्लॉक तुम कोन देखेबो द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टाइम शुड बी 8 आवर्स राइट जदी मोर एरर जदी किछि आसला which system function return the text of the error message when used in the catch block error message how can you return a user defined error message in a batch using the raise error statement what is store procedure right देखो store procedure कौन a store procedure is a pre-compiled object stored in the database right pre-compiled object let us discuss how to create a store procedure
Store procedure are created using the create procedure statement. Syntax is create procedure, procedure name as begin, then SQL statement, right? तापर जेता स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करिवो सेताळे मोर EXEC माने एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर आइदर तमे EXEC दे परिवो या फिर एग्जीक्यूट पूरा फुल फॉर्म रे लिखि परिवो देन प्रोसीजर नेम हला The following statement creates a store procedure to view the department names from the department table. Create procedure, procedure name dala PRC department as begin. Select name from human resource dot department. Right? Department table le mo store procedure tiyari kochi PRC department. Right? Then taku create kala pare mu taku execute kari pari. बुझला? You can also modify or delete a store procedure. Altering a store procedure is modified using the alter procedure statement. That is किसी modified करिया पे जाओ तो alter statement तमे use कर परिबो. For example, alter procedure name as begin select department ID name from human resource dot department. Right? So मूलरू तमे already update कर देइछो. तापे तमे changes किसी करिया पे जाओ तो alter statement तमे execute कर परिबो. Dropping तो drop procedure name. Right? The procedure taku store procedure taku tame drop kariya pe jancho single statement drop procedure name. Right? Which statement will you use to modify a store procedure? Alter procedure. Which statement define table store the names of all the store procedure? C subject. Right? जेते सब तमरा store procedure ना गुडा सब तमरा C subject रे मोर थाए. You can create a procedure with parameters. Parameters means are used to pass value to the store procedure during runtime. Are defined as input parameters. You can create parameterized store procedure by using the following statement, that is create procedure name, add title, tar variable dala char 50 size de dala. As begin print list of employees, select employee ID, the login ID, title, human resource from employee, where title equal to add title. You can execute the PRC, mane procedure name, list name store procedure by using the following statement, that is execute procedure name, then tool designer. एटा मोर run time रे parameter रे एटा मो value टा pass कोची जोटा कि जो value टा को नेकी से execute करिवो हला. Apart from a variable, you can pass a table valued parameter to a store procedure. A table valued parameter enables you to send multiple rows of data to the store procedure without creating a temporary table, or many parameters must be declared with the read only option while creating a store procedure. For example, create type, then type name as table, then more variable declaration tama hala. Create a table type named n type. You can create a store procedure that takes a parameter of table type by using the following statement, create procedure name, then tar moro type roila insert into moro branch ID, branch name, select asterisk from at parameter param table. Right? एटा कोन पे दिया होची ए जिंसटा कोन पे दिया होची जेताले तमे फ्रंट एंड रे जेताले तमरो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लॉगिन आईडी वगैरह तमरो अछि फ्रंट एंड अलगा प्लेटफॉर्म रे तमरो क्रिएट करा हुए माने डिजाइनिंग टा से डिजाइन टा कोन पे यूजर सेटा यूज करिवो यूजर केबे डाटाबेस टा को यूज करेन यूजर ताकू डिजाइनिंग पार्ट टा यूज करे पे दिया हुए डाटाबेस पार्ट टा किए यूज करे डाटाबेस पार्ट टा एडमिनिस्ट्रेटर यूज करे माने हम माने जो माने डाटा को हैंडल करू. राइट? तो सेते बेले डाटाबेस रे मोर यूजर फॉर्म रे जो तमरो जो इंफॉर्मेशन अछि ता रिलेटेड टेबल्स मोर डाटाबेस रे मोर क्रिएट हेकी थिबो. एबे यूजर जो डाटा को अपडेट करिवो से डाटा मोर कोठी जाके स्टोर होबो डाटाबेस जाके स्टोर होबो सेटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म एटा डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिजन भीतर जे कनेक्शन हुए सेताळे हमको स्टोर प्रोसीजर रिक्वायर्ड करे. राइट? तो यूजर फॉर्म रु डायरेक्टली मोर डाटाबेस पकु जायनी
यूजर फॉर्म रू स्टोर प्रोसीजर थ्रू रू मो डाटाबेस जाके डाटाटा स्टोर राइट सेथि पई तमर स्टोर प्रोसीजर रे तमर इंसर्ट स्टेटमेंट तमर यूज करा बुझला when the preceding statement are executed two rows are inserted in the branch table as shown in the following figure eta admin and user चला सीटा तमरो काली पड़ियो हला ओ सेपड़े वर्षा हेले वर्षा स्टार्ट हेलानी सेपड़े ए पड़ियो ओ थैंक यू